A very common sociological and sporting problem is the topic of discussion today on your own storytelling platform, Bol Dada Bol. Namaskar, my name is Nilanjan Datta. Today we are here to speak about age fraud. Age fraud in the country, which has been a very pertinent problem in Indian sports overall, not just Indian football, but as I said, overall across all sports in the country. हम एग्री करें, हम डिसएग्री करें, हम एडमिट, वी डिनाई, एज चीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन इन इंडियन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स को जस्ट फॉर दैट स्प्लिट सेकेंड आप थोड़ी पुश इट टू द बैकग्राउंड. लेट मी कम टू द सोशियोलॉजिकल पार्ट. एज फ्रॉड, which we all very conveniently tend to ignore, is one of the biggest sociological problems in India. Admit, deny, agree, disagree, doesn't matter. In our society, we love to cheat about our age. ये rampant है. And it can't be that all of us who kind of tend to, हम लोग का एज को थोड़ा लोअर करने में हर कोई एफर्ट करते रहते, ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स ये हुआ है. सभी लोग जानते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, हश हश करते. वी आर ऑल डिसऑनेस्ट इन दैट रिगार्ड. एंड ऑल ऑफ ए सडन व्हेन स्पोर्ट्स कम्स इनटू द फोरफ्रंट, वी एक्सपेक्ट ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन्स टू बी ऑनेस्ट. आई एम नॉट टेकिंग द साइड और प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट आउट हियर कि अरे नहीं नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन का कोई गलती नहीं है. मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो वाइसेज डीपली रूटेड इनटू द इंडियन कल्चर, इनटू द इंडियन सोशियोलॉजिकल सिस्टम, और वही पेड़ से उभर के आ रहे हैं एज चीटिंग अक्रॉस ऑल पैराडाइम्स ऑफ द सोसाइटी. सच या झूठ आप ही सोचिए, आप ही बोलिए. एक एग्जाम्पल, एक ट्रू स्टोरी. सम इयर्स बैक, a friend of mine, मैं उसका आइडेंटिटी obviously can't be revealing out here. Both of us had very good, still have some lovely childhood memories. Called me up, किसी से नंबर मिला उनको, मेरा बातचीत हुआ, and we spoke about our families, how we have moved on, some of the talks which we had, some of the moments which we shared on the cricket field, on the football field, in the swimming pool, और जो हम लोग बांग्ला में हम दुष्टुमी कहते, हम लोग इकट्ठा पढ़ाई किए. एंड देन ही आस्क्ड की अबाउट माय फैमिली. जब सुने मेरी बिटिया के बारे में, अबाउट माय डॉटर, हाउ ओल्ड एट द टाइम शी वाज अराउंड 4 or 5 years old. एंड उसने पूछा मुझे, थोड़ी 2-3 साल उम्र कम कर दूं. मैं बोला क्या, 2-3 साल उम्र कम कर दूं? ही हैड द अथॉरिटी टू डू सो. बोला 2-3 साल उम्र? बोला हाँ, काम पे आ जाएगा बाद में, सभी लोग करते हैं, कर ले, नाम बता और कर देता हूं. He had the authority to do so. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता. लोग करते हैं. बोले या पीपल पे ए सर्टेन सम एंड डू इट. तेरे लिए मैं कोई पैसा नहीं लूंगा. उसने हंसा, मैंने हंसा. मैं बोला ठीक है. Some days later he WhatsApp me, pinged. मैं बोला नहीं भाई, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑलरेडी उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो चुकी है. बोलो हो चुका है, तब तो नहीं हो सकता. बट इन इंडिया, एज वी आर सेइंग, sociologically, most of the cases, the big country that we are, even after so many years of after independence, हम लोग को बर्थ सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ उस बच्चे को नहीं दिया जाता. Maximum a month back, I was having a chat with a kind of a brother of mine. His kid is off to Europe for higher studies. So he had to go back to the place where his son was born to get the birth certificate. Because the college जिस पे उनकी एडमिशन बच्चे का हुआ है यूरोप में, that college insisted on the birth certificate. Now, ये बच्चा एज फ्रॉड नहीं किया है, his parents एज चीटिंग नहीं किया है बच्चे के लिए, because the class 10 certificates, the class 12 certificates, the graduation certificate, सब कुछ वहां पे है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है. इंडिया में वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है बहुत सारे केसेस पे, बट दिस कॉलेज इन यूरोप इंसिस्टेड वी नीड द बर्थ सर्टिफिकेट. All of these certificates, the class 10, class 12, graduation, whatever certificates the kid has,
all of those marks do stand, but the age mentioned in all of those certificates which are taken as kind of written in stone in India, Europe में नहीं माना जा रहा है. So the gentleman here, one of my kind of elder brother, had to go back to the native place where the kid was born, get the certificate, और वहां पे उनको वही बात बोला गया, सर जी क्या डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बिकॉज डाला नहीं गया है. So as a society we need to be much more responsible is what I say. So it can't be, again I reiterate, as a society we are not responsible, but we expect a sports person to be entirely responsible, entirely honest. कुछ भी हो जाए हम बोलेंगे तो एज फ्रॉड है, एज चीटिंग करके इसीलिए हम लोग आगे स्पोर्ट्स में नहीं बढ़ सकते. How big an hypocrisy is that? It's deeply rooted in our system and obviously in Indian sports, across all sports, not just football. क्रिकेट में बहुत सारे बातचीत होता है, हॉकी में बहुत सारे बातचीत होते हैं. आई एम नॉट सेइंग इंस्टेंसेस, आई एम सेइंग बातचीत होता रहता है. फ्रॉम माई ओन जर्नलिज्म एक्सपीरियंस, मजेदार स्टोरी. Early days of journalism, when I was working with the Times of India, I was sent by my sports editor, Mr. V. Srivatsa. बहुत आभारी हूं उनका. He taught me journalism, to separate a planted story from the original news, how to sniff news, how to do the production, how to work on the Quark Express, जो सुबह लोग पन्ने देखते हैं, the page making. Friend, philosopher and guide, my first guru in journalism. He sent me out to a hockey tournament. At that time it was a big hockey tournament. मैं जानबूझ के hockey tournament का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ. Across all age groups, schools from all over the country used to come and play. Sub junior level में minimum number of players which you wanted or require, or in any not just sub junior, any match play was 7. There were schools who with 7 guys on the field were beating teams who playing with 11 players. Can you imagine? Because there was a big question mark about their age. Authorities were puzzled, as they always were in all the editions, previous editions. उसके बाद भी तो एक exercise किया गया उस साल पे. I went to the tournament was being held at the then National Stadium across the India Gate in New Delhi, which is now the Major Dhyan Chand Stadium, and the age checking examination kind of जो exercise was being held at the Shivaji Stadium, जो Connaught Place पे है न्यू दिल्ली पे. वहां पे मैं गया तो कुछ एग्जामिनर्स और कुछ अथॉरिटीज वहां पे बैठे हैं एक टेबल पे, एक एक करके टीम को बुलाया जा रहा है. एंड देयर वाज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे हैड प्रिपेयर्ड, बिकॉज उस जमाने का एमआरआई टेस्ट नहीं है. आप कैसे गेज करेंगे ये बच्चा एज चीटिंग किया है, ओवर एज है या नहीं है? आपको समझना पड़ेगा. आप देख के नहीं बोल सकते अरे इनका मूछे आ गया, दाढ़ी आ गया, ये तो हमें लगता है ज्यादा है. आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं है ना, तो आपको प्रूफ निकालनी पड़ेगी. तो एक मजेदार एक्सरसाइज किया गया वहां पे. एक्सरसाइज यही था, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस था. तो एक बच्चा आया, खड़ा रहा, एक एक स्कूल करके अंदर पूछा गया, बेटा आपका नाम क्या है? एंड इट वाज बीइंग डन एट अ रैम्पेंट स्पीड. आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, पापा क्या करते, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मम्मी क्या करते, कितना भाई है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिस्टर है क्या, कहाँ तक सिस्टर पढ़ाई किए है, पापा क्या करते हैं. दे वर रिपीटेड द डेट ऑफ बर्थ क्या है, was being repeated 5, 6, 7, 8, 9, 10 times, and the guy wasn't been given even a split second to answer. It was kind of a rapid fire चल रहा था. और जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत सिखाया गया था, मोस्ट ऑफ देम फॉल्टेड. मे बी सम हैड इतना अच्छा रट्टा मारा कि निकल गया. तो जो थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ की इधर से उधर की, अरे ये तो ओवर एज है, इनको निकाल दिया गया है, स्कूल से बोला गया था. दैट वाज हाउ इट वाज डन दोस डेज. और एक टूर्नामेंट पे, फुटबॉल टूर्नामेंट पे, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा उस फुटबॉल टूर्नामेंट का, बच्चे चिट्ठा लिखते थे, अथॉरिटीज आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, वेर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, कि हमें सर ने बोला है खेल ले, कि बोल दे कि तू क्लास 9 का बच्चा है. बाहर का बच्चे भी आके उस टूर्नामेंट को स्कूल रिप्रेजेंट करके चला गया जो स्कूल में एनरोल नहीं है, पकड़ा गया है. वहां पे अथॉरिटीज जब चैलेंज किए, बट दैट वाज हाउ, देयर वाज नो फुल प्रूफ सिस्टम एज टू कैच कि कैसे आप लोगों को
पकड़ लेंगे कौन एज चीटिंग किया है, कर रहा है या कर सकता है. May I here duly mention that all of these authorities, be it those who are running the tournament in hockey or the authorities who are running the football tournament, both age group tournaments, on that day till today are extremely strict. वो लोग इसको कोई encouragement ही नहीं देते कि कोई एज फ्रॉड करे, बट दे आर हेल्पलेस. दे आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस बिकॉज एज फ्रॉड सोसाइटी में इतने हैं. टीम्स को थोड़ी ओवरऑच प्लेयर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है. अरे चलो ले लेते, कौन देख रहा है. कितने सारे, अब मैं दिल्ली में रहता हूं, यहां पे एक कॉमन जोक है, भाई कितने साल हो गया, लोगों का एज नीचे जाता है, मेरा एज ऊपर जा रहा है, लोगों का एज नीचे जाता है. जो मेरे ऊपर था एज में, वो आज के दिन पे दिल्ली में सोशोलॉजिकली इज यंगर टू मी, और मैं उससे बड़ा हो गया हूं. सो पीपल काइंड ऑफ टेक प्राइड एंड बोस्ट कि मेरा तो उम्र हुआ ही नहीं, हो गया है 45, लोग 35 ही क्रॉस नहीं कर रहा है. इवन एट दिस एज जहां पे एज चीटिंग का कोई जरूरत नहीं है. यू आर हैप्पीली मैरिड, यू हैव किड्स, यू आर वेल सेटल्ड एज ए सीईओ, फिर भी यू आर लाइंग टू द एंटायर सोसाइटी. दैट्स द ह्यूमन साइकी दैट वी हैव इन आवर कंट्री. क्योंकि ए कर रहा है तो बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं. दैट्स इट. मैं अपना सही एज बताऊं तो लोग कहते हैं अच्छा इतना है. नहीं नहीं यार, थोड़ी ज्यादा होगा तो लोग मानना ही नहीं चाहते. सो दैट्स द सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं. इट कांट बी दैट people expect you to be honest in sports while you are yourself not honest from the sociological in the sociological paradigm. हम हमेशा भारतीय फुटबॉल के बात करते. भारतीय फुटबॉल का एक इनिशिएटिव के बारे में मुझे यहां पे बोलना ही पड़ेगा. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2012 AIFF रीजनल एकेडमीज के लिए एक फुटबॉल फेस्टिवल किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे इन कल्याणी, नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, which happens to be my hometown. Under 14 teams from across all states in the country, barring maybe a couple, सभी लोग वहां पे रिप्रेजेंट किए थे. And that was the most widely scouted, centralized competition ever in the history of Indian football अभी तक. There were around 14 to 15 top-notch coaches and scouts and various other scouts. उसमें Mr. Colum Joseph told at that time the head of youth development, Mr. Scott O'Donnell, who later on went on to be our technical director, Mr. Savio Medera, who was one of the previous national team head coaches. Next, he moved on to be the head of coach education, Mr. Francisco da Costa Bruto, who had been assistant coach to Egypt under Carlos Queiroz and Nilo Vingada, and even assistant coach of the Malaysian national team. He, Sabir Pasha, who as I speak today is the technical director of the All India Football Federation, the late Bitan Singh, a youth coach, Mr. Thomas Joseph, Mr. Narayana Menon, many coaches were there from the Indian football paradigm, were there to scout players. Why? Because the regional academies at that time was to be set up. Please don't forget to go to one of our previous videos on your storytelling platform, Bol Dada Bol. Arsene Wenger's visit AIFF academies past, present and future. आप थोड़ी उस पे रिवाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ी कनेक्ट मिल जाएगा दोनों के बारे में. तो वहां पे the football fest was held for around, I believe, 2 weeks or 3 weeks, between around 16-17 days, from which 250 kids were scouted and spotted, filtered. 250. Those 250 kids were put in a training camp in Kalyani, headed by Colum Joseph Toll, for around 2 months, जहां पे पूरी filtering process हुआ. And eventually 120 kids were selected. Final 120 kids जो various regional academies में चले जाएंगे. MRI tests were conducted on all those kids. Between, I forget the exact number, between 86 to 90 were found overage. 120 में से 86 to 90 were found overage. We were looking for under 14 teams for the regional academies.
जिसको 13 साल होना है वो 18 साल निकला है. The entire exercise proved futile. Money went down the drain. And what it created, जो players सही बचा है around 32, 33, 34, उसमें क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ. मजेदार डिसबैलेंस, हाँ, hilarious disbalance if I may mention, because those 250 kids से 120 kids को चुना गया था, they were in the right proportion, कि 10 goalkeepers, 15 central defenders or 20 central defenders, defensive midfielders 7, wingers 12, इस हिसाब से. नाउ जो बचा सही एज पे टिक मार्क होके अंडर 14 निकला, उसमें गोलकीपर्स मिला 1, स्ट्राइकर्स मिल गया 1, मिडफील्डर्स मिल गया 17, डिफेंडर्स मिल गया 5. Obviously youth football is too early a stage for any player to cement his position, maybe other than a goalkeeper. There have been so many chops and changes where coaches have advised or found a player to be more suitable in a different position that he has been playing. Lot many instances all across the world. So chopping and changing or movements hoega, but it created that disbalance. State teams coached by coaches. आप ये बताइए कि मैं यदि कोच हूं, हमें पता ही नहीं लगेगा कि मेरे टीम में कौन ओवरेज है. ये मैं मानना आप मीन्स यू वांट मी टू बिलीव इट. यदि आप कोच हो, हमको ये मानना पड़ेगा आपको टीम में यदि 21 प्लेयर्स है, आपको पता ही नहीं है एज लेवल पे, यूथ लेवल पे, अंडर 14 लेवल पे कौन ओवरेज है. स्पेशली व्हेन यू आर कोचिंग योर स्टेट टीम और ए मोहल्ला टीम, बिकॉज boys are coming in from the academies, they know each one of us. That's the lalchi or the greed of certain individuals to kind of get results, immediate results, to be in the good books of their seniors or the management, saying कि मैंने तो ये करके दिखाया. मैं नहीं बोल रहा हूं कोई एक चीट कर रहा है, बट अगेन आई मेंशन दिस इज ए सोशियोलॉजिकल वाइज. मैं ओवरहियर करता हूं बहुत सारे प्लेयर्स को. मैं कोई प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहता यहां पे. कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, हाँ, बट let me speak generalized on this, not going into specific instances out here. Open secret बहुत कुछ चीजें है. शायद later on I reserve that for a different discussion on Bol Dada Bol. But how do you stop this? Well, the sociological problem that it is, इसको stop करना बहुत मुश्किल है. जापान में कोई एक चीज नहीं करता because there's a foolproof system when a kid is born. ऑस्ट्रेलिया में कोई एक चीज नहीं कर सकता because there's a foolproof system when a kid is born. हमारा देश में unfortunately today till now there's no foolproof system. लोग डेटाबेस के बारे में बोलते रहते. डेटाबेस में मेरा नाम नीलांजन दत्ता है. मान लीजिए कि मैं 10 साल का एक बच्चा हूं. हाइपोथेटिकली मैं 10 साल के लिए मैं आज रजिस्टर किया, मैं 4 साल बाद 14 हो गया, मैं अंडर 12 के लिए दूसरी नाम पे चला गया है, मेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, आप किससे पैसे पहचानेंगे मुझे? हाउ विल यू? बिकॉज हमें तो ऑनलाइन रजिस्टर कर रहा हूं फ्रॉम ए डिफरेंट ईमेल आईडी, फ्रॉम ए डिफरेंट सिम कार्ड. इट्स एज सिंपल एज दैट. कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं है मेरा कि उधर कि अरे नीलांजन दत्ता को आप पकड़ लेंगे. So the system which we have, that's an initiative, the system, the registration system. It's not foolproof because of the dishonesty that is widely prevalent in the society. लोग कहते हैं MRI tests. 2-3 points मैं यहाँ पे mention करना चाहूँगा. First of all, how much is it financially sustainable for all academies in the country to have MRI tests? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. Here we are in a country where we are encouraging more and more kids to come and play the sport. Hand-eye coordination के लिए football is quite a popular sport. It's a physical sport. 100 में से एक भी बच्चा शायद प्रोफेशनल नहीं बनेगा. 200 में से भी 2 बनने के लिए जाएंगे जिसमें कोई भी नहीं बन पाएगा. 500 में से शायद एक बच्चा प्रोफेशनल लेवल पे won't be able to make it big.
1000 किड्स में से शायद एक प्रोफेशनल बच्चा जाके बेंच पे बैठेगा, 5000 में से शायद एक बच्चा रिजर्व एज ए सब्स्टिट्यूट रेगुलर आएगा, 10,000 में से शायद 2 बच्चा रेगुलर प्रोफेशनल फुटबॉलर कुछ कमा के अच्छा खेलेगा. सो द पाइपलाइन इज लाइकवाइज. Here we are in an effort to encourage more and more kids come and play the sport. आप यदि शुरू में MRI कर देंगे, if at all, फाइनेंशियली पहले सस्टेनेबल नहीं है, कंपल्सरी कर देंगे. पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं? बच्चा कुछ खेले, टू कीप अवे फ्रॉम देयर मोबाइल, टू कीप अवे फ्रॉम द लैपटॉप और द इडियट बॉक्स, सीरियल्स, टीवी सीरियल्स न देखे, एटलीस्ट जाके कुछ खेले, फिजिकल एक्टिविटी करे. ये अवेयरनेस फिर आ रहा है सोसाइटी के अंदर. और यदि हम पहले ही उसको बोल दे आपको करनी पड़ेगी, बच्चा बोलेगा अरे टेबल टेनिस खेल ले, बैडमिंटन खेल ले, वहां पे पीवी सिंधु खेलती है, फर्क क्या है? अच्छा है. क्रिकेट खेल लो भैया, सबसे बड़ी गेम हमारा देश में. सो यू आर लूजिंग आउट. सो 1, you are losing out. 2, it's financially not sustainable for everyone. Even if you are financially, you are able to do it. When you build the final team prior to going for a tournament, you again run the risk of what happened in the selection procedure for the aiff regional academies. अब 30 बच्चे को लेकर डिसबैलेंस होके आप देखो कि मेरे तो 21 बच्चे हो रहे हैं, आप क्या करोगे कैसे? There are questions, there are question marks over the age group, over the age of many youth players all over, of certain teams, certain clubs, certain academies, but there's no foolproof system, without mentioning anyone. And the MRI tests are not foolproof. I can only tell from my AIFF Academy experience, MRI tests were conducted as and when a kid was to be enrolled in the academy, once they pass the trials. Because the trials in the academies used to happen from age group tournaments, national competitions, references, open trials, festivals, etc. etc. So when a kid is selected, Nilanjan Datta for example, मेरा नाम ही ले रहा हूँ, सबसे अच्छा सेफ है एज फ्रॉड के केस में, क्योंकि मैं एज फ्रॉड किया नहीं. There would be an MRI test. MRI test grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Grade 5 तक MRI test जाता है. Grade 2 तक AIFF Academy allowed होता था. And as they move, because they were getting more bully, a bit physical, the increase of age, grade 2 और grade 3 तक प्लेयर को हमेशा ओके टिक मार्क किया जाता है AIFF Academy में. ग्रेड 4 इंटरनेशनल AFC कॉम्पिटिशंस इज ओके. ग्रेड 5 में आपकी कोई किसी को नहीं अलाउ करते फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. द अथॉरिटीज अगेन आई रिआइटरेट, पहले और नाउ आर एक्सट्रीमली सीरियस ऑन कर्बिंग एज फ्रॉड, बट दे आर हेल्पलेस. there's also a very classic and a famous instance. मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा. Very prominent player in the Indian domestic circuit, has won the ISL, was part of the AIFF Academy, a very good promising player, hasn't played for senior India as yet, age group हर जगह खेला है, comes from a very affluent background. He was, the MRI tests at that time had found him to be overage, grade 2 के ऊपर था when he was under 14, and he was put out of the academy. अब नहीं जा सकते, नहीं कर सकते. And then his parents came in, challenged in the sense कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा, this is the age of birth, everything बातचीत हुआ, and then tests were conducted. It was found out that he was much more physically, he was much more mature than boys of that same age in that group. It was sent for studies to higher authorities, and eventually the kid was cleared. All medical permissions granted, the kid played for India. So MRI tests are not conclusive. First of all, to find out who's overage, there's an indication कर सकते हैं. And even underage players have been found overage by MRI in MRI tests. मैं ये सब बात यही इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि the menace of age fraud in our society still stays and unfortunately will be staying for long. कैसे कर्व करें वो डिस्कशन ही होता रहेगा. सेमिनार में लोग जाके बोलेगा कि अफ्रीकन टीम्स क्यों नहीं खेल सकते, मींस जाके द सक्सेस ऑफ द अफ्रीकन टीम्स, जो लोग टीम्स बैन भी हुआ है, डज नॉट रेप्लिकेट इनटू द सक्सेस ऑफ द अफ्रीकन टीम्स एट द सीनियर लेवल एट द फीफा वर्ल्ड कप, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एज चीटर्स.
सेमिनार में बोलना अच्छा है, लेकिन सोसाइटी में हम खुद क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि जो सेमिनार में बातचीत कर रहे हैं दे आर सपोर्टिंग एज चीटर्स, एज फ्रॉड, बट what I mean to say is, as a society, we are still dishonest. And unless we are all honest in the society, and the entire foolproof system of birth certificates come in digitally across all over in the country, this menace of age fraud will continue. People domestically, for their own convenience, will take advantage of it to gain results and show themselves big at the cost of Indian football not doing well at the international level. और ये चलता रहेगा. So the wait continues. Long wait होएगा, but the wait has to be there. Entirely my opinion, a kind of an educational video. Put in your messages, send us your feedback. We value all of them. Our journey has just started. We are trying to walk a path, and we would be very, very happy to have you walking the path along with us. बातचीत करिए, बातचीत करते करते, गपशप करते करते, इकट्ठा थोड़ी चाय पीते पीते आगे चलते. क्या कहते हो? बोल दादा बोल, your own storytelling platform. Till the next time, namaskar, thank you, bye bye.